Hello and welcome to another episode of Mashable Pakistan Lab. And the guest we have today is a startup founder who, along with his team members, is working to bring a change in the healthcare services with the help of technology. इस स्टार्टअप का नाम एक्सपर्ट फ्लो है और हम आज इस स्टार्टअप के सीटीओ शानुल हक से बात करेंगे और पूछेंगे कि व्हाट आर द हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स दे हैव डेवलप्ड एंड व्हाट आर दे currently working on. Assalamu alaikum Shan, thank you for joining us in this podcast. Welcome, Sam Faisal. How are you? I'm fine, dude. Thank you. Okay, Shan, before starting this podcast, में obviously मैंने और भी स्टार्टअप्स के साथ किया है और उनके फाउंडर्स के साथ इंटरव्यू किया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले पूछूं उनसे कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कि उन्होंने क्या उनका बैकग्राउंड था, फिर किस तरह वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट हुए. तो मैं आपसे भी ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ. Perfect. All of us co-founders, we are from engineering backgrounds, right? Some of us are computer scientists, some of us are engineers. The reason that we sort of got into the healthcare was because, like most of us belong to a family of doctors. And seeing them, their day-to-day struggles, we realized that the healthcare system in Pakistan and in a lot of countries around the world, it's really bad. So this sort of gave us a motivation that we have to sort of fix this problem. It is sort of some sort of responsibility of ours, because being an engineer especially, we tend to come up with simple solutions that work. So that is what gave us this sort of was the driving force for us तो to work in the healthcare sector. आपके मतलब ज़हन में कोई प्रोडक्ट्स भी थी या बस ओनली दिस वाज द आइडिया कि यार हेल्थ केयर पे काम नहीं हो रहा है तो वी शुड हमारे जहन में प्रोडक्ट्स थी काफी ज्यादा, बिकॉज वी लाइक सम ऑफ अस को-फाउंडर्स, हम लोग का प्रीवियस एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस रहा है. बट हमारे जो सीईओ है राशिद, ही बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड क्या कहते हैं, हमारे काफी दोस्त रहे हैं ठीक है इन द पास्ट. एंड a particular disease that we started working was sepsis, और वहाँ पर we realized that actually we lost a few people to this disease. And upon finding more about this dreadful disease, we realized that a lot of deaths in the world is because of sepsis. So this sort of gave us the idea कि हम लोग AI or machine learning and apply all the things that we've learned over the past years, हम इस problem को किस तरह solve कर सकते हैं. So how does your AI model work? मतलब sepsis disease पे आपका काफी ज्यादा फोकस भी है जितना मैंने रिसर्च किया है, तो शेयर करें कि कैसे आपका AI मॉडल जो है वो sepsis disease को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, and how does it work? Okay, perfect. So like I would just tell you a little bit more about sepsis before going into the details. So sepsis basically is an acute form of infection. Most people aren't aware of it. And even in the hospital environments, the patient isn't labeled sepsis. It's more like ये जो particular patient है ये pneumonia से मरा है, ये UTI से इसकी death हुई है, ठीक है. But sepsis is actually where the infection goes rampant. Like for example, आपने infection check नहीं किया और infection पूरी body में फैल गया, and what ends up happening is कि डॉक्टर के पास कोई चांस नहीं वो नहीं टाइम नहीं बचता, and he basically calls for an amputation. So this is what sepsis is, and as you can see, लोगों की disabilities होती हैं, it causes a lot of deaths, and it is actually the death toll is around it's millions actually, right, all around the world. 1 million disabilities हैं इसकी, 11 million इसकी deaths होती हैं on an annual basis. So this is what sepsis is. Now sepsis की traditional prediction is what doctors do is they are health indicators or health scores. They're basically these research scores जो doctors use करते हैं, और इन scores की basis पे doctors बताते हैं कि इस patient के ये chances. But the funny thing is ये scores कोई about 20-30 years before बने थे, तो like this even predates me, right? And they're still relying on these primitive tools. So this is where we came in. We came up with the AI model. The AI model is actually based on a patient data of thousands of patients. So the AI model is actually, the way it works is जिस तरह एक doctor over the years सीखता है
ड्यूरिंग हिज और हर प्रैक्टिस के पेशेंट्स किस किस्म के हो सकते हैं, कौन से सिम्टम्स किस डिजीज को क्या कहते हैं लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक नॉर्मली दिस वुड टेक लाइक years or 2 decades or maybe more, ठीक है, जिसमें डॉक्टर आपका बहुत एक्सपर्ट हो। So using the power of AI, deep learning, and accelerated computing, we were able to teach similar things and even better in some cases to machines. और हमारा model basically it's really good. It's like 96-97% accurate. और वो basically बता सकता है कि ये patient अगले 6 hours बाद sepsis में जाएगा कि नहीं जाएगा. So that is how it's working basically. तो आप पुराने पेशेंट्स का डाटा जो है वो अपने मॉडल में डालते हैं, उसके थ्रू फिर ये प्रेडिक्ट करता है नए पेशेंट्स को जब देख के, ये क्या सीन होता है? एग्जैक्टली बेसिकली हम एक मशीन को इस तरह सिखा रहे हैं जिस तरह एक डॉक्टर लर्न करता है। पुराने पेशेंट्स को देखता है और नए पेशेंट्स को कांसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। यस, एग्जैक्टली, सही। तो इसके अलावा भी आप लोग काफी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे आपकी कोर प्रोडक्ट है, आप कहते हैं डिपनॉस्टिक्स है, अब उसके बारे में भी आपने क्लेम किया हुआ है कि वो 6 घंटे के अंदर 6 घंटे फ्यूचर में पेशेंट को देख लेता है, बताता है कि किस तरह पेशेंट जो है वो क्या फेस करेगा इन द फ्यूचर। तो वो कैसे काम करता है? और आप लोग ने ये भी क्लेम किया हुआ है कि जो कॉस्ट है वो हेल्थ केयर सर्विसेज की वो भी रिड्यूस कर देता है काफी हद तक, तो वो क्या सिनेरियो है उसके बारे में? एग्जैक्टली, सो डिपनॉस्टिक्स इज एक्चुअली हमारा एक प्रोएक्टिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। Or the platform is actually the first one in the platform was the sepsis predictor, and we plan to add more disease predictors in the future. And for the sepsis prediction, sorry, can you repeat the question? Yeah, I asked you about the diagnostics. आपके जो प्रोडक्ट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहता हूँ शेयर करें कि आपने क्लेम किया हुआ है कि 600 आवर्स जो है वो फ्यूचर में देख लेता है एक पेशेंट के बारे में, तो एक तो वो शेयर करें कि वो कैसे काम करता है, दूसरा आपने एक और क्लेम भी किया हुआ है कि कॉस्ट भी हेल्थ केयर सर्विसेज की रिड्यूस करता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर। Okay, perfect. So about the like diagnostics is basically a platform, and sepsis prediction is one of the models that we're working on. And the way ये 6 hours ahead of time predict कर सकता है कि this is not particularly new in the tech world, because a lot of such predictions are being done in the financial areas as well. जो आप stock prices predict करने के लिए बताते हैं कि पास्ट ट्रेंड्स ये रहे हैं स्टॉक्स के और फ्यूचर में ये जा सकता है स्टॉक, राइट? और ये पूरी दुनिया में होते हैं। तो वी आर अप्लाइंग सिमिलर टेक्निक्स टू हेल्थ केयर। तो आप प्रीवियस ट्रेंड्स देख के आप नेक्स्ट 6 आवर्स का बता सकते हैं देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट दिस पर्सन माइट गेट सेप्सिस बेस्ड ऑन द प्रीवियस सिम्टम्स, क्योंकि आप उसका ट्रेंड देख सकते हैं। So that is how we are able to predict up to 6 hours and even more in some cases. But the 6 hours mark is where we can tell with high confidence. So we don't rely on any information further than that. ठीक है, तो मतलब प्रीवियस डाटा के बेसिस पे आप जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं आप फ्यूचर डिवाइस, यही कहना है? Exactly. ओके, तो कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगी हेल्थ केयर सर्विसेज की जो? अच्छा, the reduction in cost is sort of an indirect effect because of early prediction. Because आप early predict कर सकते हैं और detect कर सकते हैं sepsis, doctors early intervene कर सकते हैं, antibiotic administration early हो सकती है, and because of this, जो normally maybe 13 days stay करेगा, वो maybe 10 days में फारिग हो जाएगा। जब वो patient जल्दी free हो रहा है, तो obviously patient के medical bills कम लग रहे हैं, right? Because the patient doesn't have to pay for those 13 days. He only has to pay for 10 days. ये तो patient की side से cost saving होगी. And for the doctor, hospital side, what hospitals basically want is to reduce the length of stay of patients, because जितने बेड्स उनके जल्दी खाली होंगे उतने वो नए पेशेंट्स ऑन बोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए पेशेंट टर्नओवर ज्यादा हो जाता है। So basically, the way diagnostics works by offering this early warning system of sorts is patient को भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसके पैसे कम लग रहे हैं, और हॉस्पिटल को भी फायदा हो रहा है क्योंकि हॉस्पिटल फिर एक पेशेंट को फ्री करके फौरन दूसरा पेशेंट ला सकता है।
And there's also an added advantage कि hospital की एक goodwill भी बन रही है because for example there are two hospitals, right? Hospital A is where diagnostics is not working, right? वहाँ पर diagnostics नहीं लगा हुआ, and hospital B is where diagnostics लगा हुआ है, तो वहाँ आपको eventually people would know कि यार इस hospital में लोग जल्दी free हो जाते हैं, यहाँ पर hospital administration और जो patient care है in form of sepsis is really good. The people will eventually go to that hospital, hospital B. So this sort of makes a goodwill, and hospital के profits भी बेहतर होते हैं. So this works for both patients and hospitals. That is true. Obviously, जो ज़्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग प्रेफर भी इनको ही करते हैं. लेकिन मैं एक और बात पूछूँ आपसे कि प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स वो तो परचेज करेंगे, तो वो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर कैसे आप जो है एड्रेस कर रहे हैं या करेंगे कि हॉस्पिटल्स के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो अफोर्डेबल रहें, ताकि सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं और क्लिनिक्स भी खरीद सकें और लोग भी खरीद सकें, उनके लिए भी फायदा हो सके. So primarily ICUs, and these would be like the hospital would actually be ये burn units या जिनके emergency units हैं, because sepsis इस तरह की जगहों पे ज्यादा prevalent होता है. Like the reason it's cost effective for hospitals, because obviously हम उन्हें एक extra cost incur करने को कह रहे हैं, right? हम कह रहे हैं कि ये एक additional आप चीज कर रहे हैं already, और आपको एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे. तो द रीजन वी थिंक इट्स कॉस्ट इफेक्टिव इज, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सेप्सिस की कॉस्ट आती है डेली इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स इन यूएस. ये आपको मैं बता रहा हूँ फिगर बेस्ड ऑफ रिसर्च पेपर, based on a research paper. हमारा current model is roughly around that, but for on a monthly basis. So actually by using our product, you would actually be saving those costs. So this is just a matter of convincing hospitals कि आप you're actually saving the cost, right? By spending a fraction of an amount by giving us, because that is what powers our tech, right? Yes. Exactly. So this is sort of an incentive to use our product. ओके. आपकी एक और प्रोडक्ट भी है शान, जो कि एनवीआर के नाम से है, तो इज इट द सेम लाइक द नॉस्ट्रिक्स और उसका कोई फंक्शन डिफरेंट है? Obviously it's a variable. नहीं, okay, so Deepnostics is the platform, right? Nostro is the step. Okay. Hello. And Nware is basically a variable biosensor, and by what that I mean कि Nware is sort of like a cardiac monitor जो ICUs में होते हैं, right? In ICU, the doctor hooks you up with different leads ताकि आपके vitals आ रहे हो, ठीक है? So this has been done for years now, right? And it seems like a primitive idea, because वो 6 vitals using the latest generation sensors, you can do that by using only your wrist, and you can see these examples, right? आपकी fitness watches आ गई, बहुत बेहतरीन. Apple working, they provide ECG, right? So we developed a biosensor that आप सिर्फ एक wrist पे पहनते हैं, और वो एक नहीं या दो नहीं, वो सारे आपके कल कर सकता है. And because of that, वो vitals हम use करते हैं to get data inputs from patients. और ये वो patients हो सकते हैं जो कि डॉक्टर डिस्चार्ज कर दें, but these patients might still be sort of highly critical, right? So doctors उन्हें remotely वो कर सकते हैं, observe कर सकते हैं by using this biosensor. और ये जो है ना हमारे प्लेटफॉर्म के साथ easily integrate कर जाता है. So this is what we're working on as well. So yeah. Yeah, these are very great products. I mean, healthcare को काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में जिस तरह डिजीजेस आ रही हैं आजकल, तो जितना हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा इजी होगा हमें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना. शान, मैं आपसे ये पूछूंगा, आप अभी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी बनाई हुई हैं आपने, तो क्या प्रैक्टिकल यूज़ हो रही है किसी फिलहाल किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में या किसी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर वाली जगह पे? हाँ, एग्जैक्टली. अभी हमारी प्रोडक्ट जो है ना, वी आर टेस्टिंग इट विद 3 हॉस्पिटल्स राइट नाउ इन पाकिस्तान. And hopefully we'll be like these will be commercially available by the end of this year, because by then हमारे ये tests complete हो जाएंगे. So yeah.
And eventually, in the next few years, we'll try to have as many hospitals on board as possible. Great. So, एक दो नहीं बल्कि like I would I would want कि all of the hospitals in Pakistan would be using such a product. Yeah, let's hope सब लोग कैच ऑन कर रहे हैं इसके साथ। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं शान आप लोग एक्सपर्ट फ्लो पे हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर? How do you mean, like जैसे technologies आपने in what एआई sense? पे बात एआई पे काम करते हैं, उसके Oh, अलावा okay. व्हाट अदर टेक्नोलॉजीज आर यू यूजिंग फॉर द योर प्रोडक्ट? Okay, so हम लोग AI में we are using machine learning and deep learning, right? Basically very teaching human-like behavior to machines. और उसके अलावा as I told you earlier हम लोग का ये जो Nwear is the biosensor. ये basically it's like a wearable. और this basically comes under medical IoTs, Internet of Things. So इस पे हम काम करें and all of this in the back end it's running on cloud. So हमारे cloud partners are AWS. और ये जो हमारी accelerated computing है, the way we are able to teach these machines really quickly Yeah. is by using these accelerated computing platforms. और उसका technology partner हमारा है NVIDIA, and which is how we got to implement all of this. सही। तो अच्छा, एनीथिंग एल्स कि अपने स्टार्टअप के बारे में अगर आप शेयर करना चाहें जो मैं अभी तक नहीं पूछ सका, कि प्रोडक्ट कोई कोई सर्विस जो आप दे रहे हैं या आगे प्लान कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएं कि फ्यूचर व्हाट आर यू वर्किंग ऑन फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट? So eventually, like the future goal is our platform Diagnostics is running in a few hospitals. और उसमें sepsis का predictor नहीं है, it has all the disease predictors, AI ओके based. Because as I told earlier, doctors rely on these health risk calculators, जो कि like they were developed over 20 years. So we want to use AI in the field of healthcare as well, ताकि हमारे पास बेहतर से बेहतर डिजीज प्रिडिक्टर्स हो, हम लोग सिम्टम्स यूज करके हम लोग फौरन बता दें कि ये बंदे को ये चीजें हो सकती हैं. सो दैट इज आवर एंड गोल टू sort of I would say eradicate preventable diseases by the use of AI. So that is where we see ourselves going. ओके। हाँ, आप लोग एनआईसी के साथ आप लोग जो है ना कनेक्टेड हैं, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द एनआईसी एंड द इंक्यूबेशन प्रोग्राम? Yeah, NIC, I would say that was basically a very brilliant experience of ours, because before then, like I know everyone calls themselves entrepreneurs, right? क्योंकि हर कोई आजकल entrepreneur है, but NIC actually taught us what it means to be an entrepreneur. So there were a lot of things जो हमें पहले नहीं पता थी before NIC. और NIC में there are a lot of helpful people. हमें हमारे लिए इन्होंने daily workshops conduct की for business development. They matched us up with these really brilliant people who had the experience of running startups before. So all in all, we got to learn a lot of things from NIC over the years. Or even though we are just an alumni now, but they're still helping us to this day. So I would say that this was one of the best things that happened to us. So really thankful to those guys. तो पूरे स्टार्टअप जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ शेयर करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे नए ऐसे ग्रेजुएट्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे इंटरप्रेन्योर्स बनने के बारे में या स्टार्टअप कल्चर की तरफ आने के बारे में। तो इट वाज इट डिफिकल्ट कि जब आपने शुरू किया था अपनी ये जर्नी कि यार कि अब हमें ये काम करना है, हेल्थ केयर सर्विसेज पे टीम बनानी है? ऑब्वियसली एनएससी के साथ आपको काफी हेल्प मिली, लेकिन उससे पहले हाउ वाज इट? Was it difficult? Was it good? I Pakistan would में say ऐसा it culture क्या was difficult, but like obviously, like everyone else, we made a few mistakes along the way, and I would love कि कोई और इस तरह की mistakes ना make करे. But like word of advice would be to like really pick your team, like be sure, like and work with people you trust. कि you know कि चाहे आपके पास पैसे आज आए या ना आए, right? और things are really uncertain, but choose a team जिसको ये चीजें पता और वो आपके साथ फिर भी stick करे. That is a team that investors invest in. They don't invest in your startup or tech. ये चीजें तो बन जाती हैं बहुत easily.
But startups like these VCs and angel investors, they actually see कि ये team कितनी strong है, साथ कितना अरसा रहे, right? Yeah, So exactly. this is an advice and from our side, and I would say that like the journey, like there were a lot of other things, but yeah, and one other advice would be कि अगर आप startup कर रहे हो ना, right? And if you are working on your idea, then just work on that. Like I see people जो साथ में jobs भी कर रहे हैं, Hmm. जो sort of 10 चीजें और भी कर रहे हैं, और Yeah. startup is just like thing for them कि हाँ चलो चल गया तो ठीक है. But you see all of these famous examples, right? Steve Jobs and a lot of other people. Yeah, तो Zuckerberg and all. इन्होंने they gave up everything to work on their just one idea, and that is where the magic happens. So yeah, I would say that the journey has been difficult, but there were a lot of things that we learned along the way. Exactly, बिल्कुल आपने सही कहा। जब तक आप अपने 100% नहीं देंगे, ऑब्वियसली एक स्टार्टअप को काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है, काफी ज्यादा एक मेहनत चाहिए होती है, और अगर आप पूरा नहीं 100% दे रहे तो वो वहीं पे ही रुक जाएगा। थैंक यू शान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट। आपसे बात करके अच्छा लगा, एंड Thank आई you for होप कि आपकी having me. प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा आगे हॉस्पिटल्स में यूज हो, ताकि पाकिस्तान में जो एक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो बेहतर हो सके, जो अब करंट ट्रेंड चल रहा है उससे। थैंक यू शान, थैंक यू सो मच। एज फॉर आवर व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। We will meet with you in the next one. Inshallah. Allah Hafiz.